अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं कॉम्पैक्ट स्पेसेस की एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूं, मैं सबसे लाइट से डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट द कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया फॉर अ सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स। ठीक है, एक्स की अपनी टोपोलॉजी है और आपके पास, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में मैं इसका रिजल्ट जो है प्रॉपर वे में राइट करूंगी। वाई जो है वो सबसेट एक्स। ठीक है, सो अब एक्स की अपनी टोपोलॉजी और वाई की अगर जो टोपोलॉजी एक्स से ली जाए उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड टोपोलॉजी। ठीक है, अच्छा, एक्स की अगर मैं देख रही हूँ, मैं टोपोलॉजी ले रही हूँ ताऊ ऑफ एक्स, सो दिस इज द टोपोलॉजी ऑफ एक्स। टोपोलॉजी ऑफ एक्स, ठीक है। आपको पता है कि जो इंड्यूस टोपोलॉजी होगी ताऊ ऑफ वाई, वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी? उसमें जो ओपन सेट्स होंगे वो आपके होंगे वाई इंटरसेक्शन यू, सच दैट यू इज ओपन इन एक्स। ठीक है, ये आपकी इंड्यूस टोपोलॉजी है और ऑलरेडी आपने बहुत से रिजल्ट्स किए हैं जिसमें सेट्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं होते कि ओपन हो एक्स में, एक्स की टोपोलॉजी में, लेकिन वो वाई की टोपोलॉजी में ओपन होते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूस टोपोलॉजी है वाई की। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कवरिंग ऑफ वाई, ठीक है, अगर मैंने वाई को कवर करना है, कवरिंग ऑफ वाई, वाई की जो कवरिंग है उसकी एक तो ये सेंस बनती है कि मैं वाई की ही इंड्यूस टोपोलॉजी में ओपन कवर लूं। ठीक है, अगर मैं कवरिंग ऑफ वाई ले रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि वाई इज कम्पैक्ट, वाई इज कम्पैक्ट compact in its topology, इसका मतलब यह है कि every open cover of y has a finite set। ठीक है, if every open cover of y से v अल्फा, अच्छा अब ये v अल्फाज जो हैं, अल्फा बिलोंग्स टू i, अब ये v अल्फाज जो हैं ये आपकी y की टोपोलॉजी से बिलोंग कर, हैज अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, और अगर मैं ये इसको अगर मैं गौर से देखूं तो आपका ओपन कवर मींस y इज इक्वल टू यूनियन फॉर अल्फा बिलोंग्स टू i v अल्फा। अब चूंकि आपका v अल्फा जो है वो बिलोंग करता है y की इंड्यूस्ड टोपोलॉजी से, इसका मतलब यह है कि आपका हर v अल्फा जो है कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इंटरसेक्शन u अल्फा, वेयर u अल्फा इज ओपन इन x। ठीक है, अब y जो है वो आपका बेसिकली कंटेन कर रहा है, या y इज एक्चुअली इक्वल टू u अल्फा बिलोंग्स टू i v अल्फा। अब आप और यहाँ से आप ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि v अल्फा, बिकॉज v अल्फा इज द इंटरसेक्शन ऑफ y इंटरसेक्शन u अल्फा, इज एक्चुअली कंटेन इन u अल्फा फॉर ऑल अल्फा। ओके, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट्स। यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ, एक मिनट जरा, चूंकि ये ओपन कवर है इसलिए मैं इसको इक्वालिटी में लिख रही हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू, y is equal to union alpha belongs to I v alpha, and every v alpha is contained in u alpha, so this is contained in union of alpha belongs to I u alpha। ये जो है ये आपके ओपन सेट्स किसमें है? ओपन इन y। ठीक है, और ये आपके क्या है? ये आपके ओपन इन x है। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप y की कवरिंग लेते हैं तो ये एक्चुअली कवरिंग कंटेन करती है किसी x की कवरिंग में। y इज कंटेन इन यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू i u अल्फा, और इसी कवरिंग को यूज करके आप y की कवरिंग भी फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप y को कवर कर रहे होते हैं, इट्स बेटर टू टेक a collection of open sets from x that covers y। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कलेक्शन, क्योंकि अगर आप ओपन सेट्स की कलेक्शंस y से ले रही हैं, दिस इज इक्वल टू से दैट यू आर टेकिंग दैट कलेक्शंस, यू आर टेकिंग अ corresponding collections of open sets in x। ठीक है, कहने का अब मतलब ये है, मैं इसे राइटिंग में लिख रही हूँ कि a collection of subsets, so this is the definition of covers in the subspace topology। ठीक है, a collection of subsets of x,
ठीक है, एक्स आपकी जो है वो मेन स्पेस है, whose union uh, contains y is called cover of y. So जब भी मैं y का कोई कवर लूंगी, so I will say that A is a cover of y and y is contained in x. So this is equivalent to say that you are taking u alpha where alpha belongs to I and your each u alpha belongs to the topology of x such that y is contained in union of alpha belongs to I u alpha. Okay, so this will becomes the definition of open cover if I am taking the open sets. ठीक है, so ये अगर आप open cover ले रहे हैं y में, ये equivalent है, ये कहने के कि आप y की, क्योंकि इन्हीं u alphas को यूज करके आप y का एक ओपन कवर जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो सबस्पेस क्राइटेरिया, सबस्पेस कंपैक्टनेस क्राइटेरिया क्या है आपका? सो कंपैक्टनेस क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस, so this compactness criteria for subspace. ठीक है, so compactness criteria for subspace क्या है आपका कि if you have a subspace, so it's a lemma. ठीक है, और लेमा का जो प्रूफ है वो मैं आपको एक्चुअली इस लेक्चर के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो आई विल से दैट लेट y is the be a subspace of x, be a subspace of x and x is a topological space, then y is compact in its subspace topology. ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ compact in the subspace topology. Subspace topology if and only if, so this thing is equivalent to say that every cover of A, every cover of Y, एक मिनट, every cover of Y by open subsets of X, right, has a finite subcover. ठीक है, और इसका जो प्रूव है, लाइक चले मैं इसका प्रूफ करवा देती हूँ, लेकिन जो फिर लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो सारी जो है वो आप इसके प्रूफ में कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने y को कंपैक्ट लेना है इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी में. वो किस तरह से लेना है वो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया. एवरी कवर ऑफ y बाय ओपन सेट्स इन x, ये भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप कवर ले रहे हैं ऑफ अ सबसेट्स ऑफ x हैज अ सब फाइनाइट सब कलेक्शंस. ठीक है, सो इसका प्रूफ जो है वो बेसिकली सिंपल ही है. और सो प्रूफ में सबसे पहले मैं ले रही हूँ y इज कंपैक्ट, y कंपैक्ट है. सो उसके लिए मैं ले लेती हूँ कि व्हाट डज दैट मीन. सो दिस इंप्लाइज दैट एवरी ओपन कवर, अच्छा कंपैक्ट है, इसकी अपनी सबस्पेस टोपोलॉजी. ठीक है, अपनी जो y की सबस्पेस टोपोलॉजी है उसमें ये कंपैक्ट है. सो एवरी ओपन कवर ऑफ y, this open cover of y is in a subspace topology has a finite subcover, finite subcover. और ये आपकी y की कंपैक्टनेस है. और आपने ये प्रूफ करना है. नो माय क्लेम इज कि अगर मैं y को
अगर मैं कवर ले रही हूँ, ओपन कवर ले रही हूँ यू अल्फाज का, और ये जो यू अल्फाज हैं ये टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स की टोपोलॉजी से, ठीक है। देन so this implies there exists some u1 u2, this has a finite subcollection un's such that y is contained in union for I from 1 to n ui's। ये मेरा जो है वो क्लेम है। अच्छा, उसके लिए अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले एक कवर ले रही हूँ a, ये मैं कवर लेती हूँ u अल्फाज का, ठीक है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू i, एंड दीज u अल्फाज जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं x की टोपोलॉजी से, सच दैट y is contained in union for alpha belongs to i u अल्फा, ठीक है। अब y जो है वो, अब ईच u अल्फा जो है ये आपका क्या है, ओपन है x में। सो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल अल्फा, सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं v अल्फा लेती हूँ, v अल्फा इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन u अल्फा, and for all alpha belongs to I. So this is open. So each V alpha is open in Y because it belongs to the induced topology of Y for all alpha. So for all alpha, alpha belongs to I. So this implies your Y is actually because U alpha is each U alpha is the subset of Y. So Y is equal to Y is, you can say because your Y is contained in union of alpha belongs to I U alpha. So again अगर मैं Y intersection Y ले लूँ, that is equal to Y. So Y intersection Y is equal to Y. और okay, एक मिनट, let me explain it. So Y is contained in union of alpha belongs to I U alpha. So Y intersection Y अगर मैं ले लूँ, so this is the Y intersection this union. So this is actually contained in, or you can say equal, okay, I will take contain or equal, is union of alpha belongs to I Y intersection U alpha, ठीक है। और this is equal to union of alpha belongs to I V alpha. So इसका मतलब क्या है कि Y is contained in union of alpha belongs to I V alpha, and so this implies your V alpha, alpha belongs to I, is an open cover of Y in the subspace topology of Y. So using the compactness of Y, so there exist say V1, V2 and Vn such that Y is contained in from I 1 to n Vi, and this is actually the subsets of, so this can be written as union for I is equal to 1 to n Y intersection Ui, and Ui's are actually the elements that belongs to the open cover, that belongs to the cover of Y. So Y is contained in, because Y contained in union of intersections of these sets, so Y is contained in union for I is equal to 1 to n. So this is the basic set theory. So Ui's. So this implies U1, U2 to UN is a finite subcover of Y. ओके, सो ये आपका वन वे हो गया। नेक्स्ट आपका ओके, सो कन्वर्सली आप ये सपोज कर लें कि if you have a cover of Y in X,
U alpha, so there exists. So this is your supposition, the finite subcover such that your Y is contained in union for I is equal to 1 to N U I. So this is your supposition. Now claim आपका क्या है अब कि Y जो है वो Y is compact. Y compact के लिए आप ये कर लें कि लेट कर लेते हैं कि V alpha in the subspace topology, okay, V alpha is an open cover of Y, okay. So if it is an open cover of Y, sorry, this is open cover of Y, so this implies Y is equal to or Y union for alpha belongs to I, V alpha, okay. So this is, I have to find a finite subcover. So V alpha is in the form of because this is my supposition that whenever I take any cover of Y in X, I always find a finite subcover. So V alpha belongs to the induced topology of Y. So every V alpha then in the form of अगर मैं देखूं तो जो हर V alpha है वो आपका Y intersection U alpha की फॉर्म में U alpha या कोई और भी आप ये U alpha में ये वाले नहीं ले रही कोई और भी ओपन सेट्स हो सकते हैं so U alpha की फॉर्म में मिलेंगे so this implies that this is equal to union for alpha belongs to I so I will take Y intersection say A alpha and A alpha is open in X so this belongs to the topology of X ठीक है so what does that mean it's mean Y is contained in union for alpha belongs to I A alpha okay because it's the intersection and contains in this collection so for all and A alpha actually belongs to the topology of X okay so Y is contained in so using our assumptions because this is an open cover of Y so using our supposition there exists a subcollection say A1 A2 and say AN. So this is our supposition. Supposition is whenever you have a cover of Y, you always get a finite subcover of Y in X. Okay. So A1, A2, AN such that your Y is contained in union for I from 1 to N AIs. Okay. And okay, your Y is contained in union for I is equal to 1 to N Y intersection AI is actually this is equal to I use so contain or equal so so this is exactly equals to your I from 1 to N if you take intersection of Y on both sides Y intersection Y becomes Y and you get this expression on the right hand side and I is equal to 1 to N so this is your VIs okay and VIs are among the over VI belongs to over open covers ठीक है so this implies your Y is contained in union from I is equal to 1 to N VIs so this is a finite subcover 1 to N is finite subcover of Y in induced topology of Y so सबस्पेस टेस्ट क्राइटेरिया क्या है कि मैं अगर कोई ओपन कवर ले रही हूँ अगर मैं ये कह रही हूँ कि लेट कर लेती हूँ मैं सबस्पेस क्राइटेरिया में व्हेनेवर आई टेक एंड दिस इज एन ओपन कवर ए अल्फा इज ओपन cover of Y and Y is a subset of X so this implies Y is contained in this is equivalent to say that Y is contained in union for alpha belongs to I A alpha and this A alpha
belongs to the topology of X. So this is equivalent to say that I am taking an open cover in Y. Okay, so ये आपका सबस्पेस टेस्ट क्राइटेरिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।